be interested in people's lives rather than be interesting. मेरा सबसे मुख्य में मुख्य आदमी जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला है, उस आदमी का नाम है आकियो मोरिटा, chairman of the Sony Corporation for years at a stretch before Akio passed away. Akio से मैं बहुत सीखा हूँ, और एक टीवी इंटरव्यू पे मैं आकियो की बात सुन रहा था, तो टीवी इंटरव्यूअर ने आकियो से पूछा कि यार आकियो, तूने इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन बनाई है, सोनी कॉर्पोरेशन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड यू हैव सच वंडरफुल नेम एंड ब्रांड रिकग्निशन. मैं नहीं समझता हूं ऐसा कोई हिंदुस्तानी है जो सोनी कॉर्पोरेशन को नहीं जानता होगा. We have 1.2 billion people. Everybody strives at some point in time to have a Sony product. How can any one person start a wonderful organization like that? तो आकियो से पूछ रही थी ये लेडी जो इंटरव्यू कर रही थी उससे कि तेरे सक्सेस की क्या ऐसी बात है, ऐसी क्या चीज है आकियो आप में जो और लोगों में नहीं है? और आकियो ने सिर्फ एक ही बात कही. आकियो ने कहा सब लोग मेरे जैसे ही हैं, शायद मुझ में और लोगों से क्यूरियोसिटी थोड़ी ज्यादा है. क्यूरियोसिटी थोड़ी ज्यादा है और मैं ज्यादा सवाल पूछता हूं. मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, मैं ज्यादा सवाल पूछता हूं. Friends, there's a Chinese proverb that says questions are 1,000 times more powerful than answers. One person who I have a lot of admiration for in that particular regard is Azim Premji. Azim Premji is only focused on his strengths. आपको ऐसा लगता नहीं है कि अजीम प्रेमजी को कभी ना कभी कोई डिफिकल्टीज आई होंगी लाइफ में? सबको आई हैं, मगर डिफिकल्टीज को, वीकनेसेस को, तकलीफों को अजीम प्रेमजी न देखता है. अजीम प्रेमजी सिर्फ एक ही बात देखता है और वो ये है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे कैसे कैपिटलाइज करूं. 22 साल का आदमी यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ रहा है, पिताजी गुजर गए हैं और इमीडिएटली उसको वापस बुलाया गया है. उस टाइम पे एक कंपनी चलाई जा रही है जो तेल बेचती है, विप्रो तेल. यू गाइस नो द स्टोरी. विप्रो का तेल बिका जा रहा है. एनुअल टर्नओवर इन अमेरिकन डॉलर्स $1.5 million at that time. Very, very small. Today, company's shape has completely changed, as you guys know. A major IT powerhouse around the world with $1.76 billion of annual revenue. And I think the root cause of that is because one man, Azim Premji, does not focus on his weaknesses. Azim Premji only focuses on his strengths. There was actually a story that he once told, which I thought was really funny, so I thought I'll tell you about the story. Azim Premji ने एक बार कहानी बताई है. कहते हैं एक ऐसा है कि रैबिट स्कूल है, उसमें वो रैबिट्स या बनीज वो लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए. तो पेरेंट्स सुबह को उनको अच्छी तरह से तैयार करके स्कूल में भेजते हैं, और स्कूल में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, और वो 2 सब्जेक्ट्स ये हैं. एक, हम आपको हॉप करना सिखाएंगे, बनीज हॉप करते हैं, है ना, हम लोग हॉप करना आपको सिखाएंगे, वो बनीज को दौड़ना सिखाएंगे जल्दी से. और दूसरा सब्जेक्ट ये है कि हम आपको स्विम करना सिखाएंगे, तो हम आप बनीज को स्विमिंग सिखाएंगे. ठीक है. तो एक निजू वashwani जैसा कोई बनी है जो अपने बच्चे को भेजता है स्कूल में, और वो बच्ची आती है, मेरी बेटी है 13 साल की, so I'll talk about my daughter, so वो बच्ची आती है वापस, तो बेटा कैसे रहा स्कूल? हाँ ठीक रहा डैडी, मगर मुझे हॉपिंग में तो बहुत मजा आता है. मैं हॉपिंग में तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे स्विमिंग करना नहीं आती है. वो मास्टर जी ने बहुत सिखाया है, मगर मुझे स्विम करना नहीं आता है. तो निजू जी बैठते हैं अपनी बीवी के साथ, बोलते हैं यार ये तो मुसीबत वाली बात है, हमने भेजा है इसको, बच्चे को अच्छे हम प्राइवेट स्कूल है, इतने पैसे खर्च रहे हैं, अच्छी तरह जाना चाहिए ये स्विमिंग करना, तो क्या किया जाए? तो कहते ठीक है, चलो एक बात है कि ये हॉप करना तो आता ही है ना इसको अच्छी तरह से, हॉपिंग में ये बिल्कुल ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको हॉपिंग वाले क्लासेस में से निकाल दीजिए, इसको सिर्फ स्विमिंग के क्लासेस में लगाइए, क्योंकि स्विमिंग इसको नहीं आती है अच्छी तरह से. अब भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए कि बनी कब स्विमिंग करना सीखा था? अजीम प्रेमजी की बात यह है कि हम लोग कभी कभी
अपनी weaknesses पे इतना focus करते हैं कि we forget कि if we only focus on our strengths, we can make miracles, we can make wonders. Would you all agree? Integrity, commitment, and character. This is my last story over here, and I need to get off the podium over here. One stormy night in Philadelphia, in the United States, an elderly couple walks into the door of an old Philadelphia hotel, and what they notice is that it was raining, and they're trying to get out of the rain, and they notice that the hotel is full, and they don't have any rooms. And the clerk at the front desk tells them, gosh, I'm really sorry, I don't think you'll be able to find any hotel room tonight because there are 3 conventions in town, and you will not be able to find. Sorry? Last story Hindi mein batai jaye. Last story Hindi mein batai jaye. तो ये elderly couple इस होटल में जा रहे हैं, जाके बैठते हैं, तो वो क्लर्क बताता है उनको कि भाई साहब ये तो रूम तो नहीं मिलेगा आज यहाँ पे, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं मगर ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा रूम. So you're going to have to find a different room. You're going to have to, think about what you want to do. And as the elderly couple is, just about ready to walk out, the clerk pulls them back and says, मगर रुक जाइए भैया, हम आपको कैसे भेज सकते हैं? आप बूढ़े लोग हैं, हम आपको भेज तो नहीं सकते हैं यहाँ से, आपको नहीं जाने देंगे. आप एक काम कीजिए, मेरा अपना रूम है. I have my own room. I'm the clerk over here. I have my own room. Why don't you just take my room? It's not the most comfortable room, but I think you'll be okay for the night. आप वहाँ पे सो जाइए और सुबह को ठीक है. वो लोगों ने मान लिया. वो कहते हैं ठीक है हम जाते हैं. They go away and take good rest. Next morning when they're coming out, the elderly couple comes out and the clerk is still there. The elderly gentleman comes in and shakes hands with the clerk and says, young man, do you know what you did yesterday? With what you did yesterday, I think you should be the general manager of the world's best hotel. With what you did yesterday, I think you should be the general manager of the world's best hotel. And guess what? Maybe one of these days I will build you one to manage. ठीक है? हाथ मिलाया, elderly couple चले गए. 2 साल गुजर गए. 2 साल के बाद ये फिलाडेल्फिया जो वो है वो तो आदमी भूल गया था इस बात को. ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग कहते रहते हैं, कि yeah, मैं बना. But he receives a letter after 2 years. And he sees in the letter, it reminds him of what had happened 2 years ago. And enclosed is a ticket to New York City. And tells him, ये 2 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था भाई साहब, मैं चाहता हूं कि आप वहां पे न्यूयॉर्क सिटी में आइए आप जरा. अब ये तो पहले तो ये बात ही भूल गया था, मगर कहता है चलो ठीक है, अब ये टिकट आ गई है तो हम लोग देख के ही आते हैं, क्या फर्क पड़ता है. Come on, let's go to New York City and let's go ahead and find what happens. So he takes a train and he goes to New York City, and lo and behold, at the train station, the elderly couple is there waiting to receive him. And they put him in their vehicle and they take him out there at the intersection of 34th Avenue and 34th Street and 5th Avenue is where they take him in New York City. And the elderly gentleman points to this beautiful new structure, red brick building that has been built, humongous structure that has been built, and he points out to that building and says, this is the new hotel that I have built for you, young man. You see, ladies and gentlemen, the elderly man's name was William Waldorf Astor, and the New York property is called Waldorf Astoria. Many of you might have heard about the beautiful hotel, Waldorf Astoria. It is the equivalent of your Taj property over here. It is an absolutely gorgeous, gorgeous hotel that was built more than 100 years ago on the commitment, integrity, and character of a person. मैं सिर्फ एक ही बात कहने वाला था. No, I think I'm okay with this. मैं सिर्फ एक ही बात बोलने वाला था, और खास तौर पर हिंदी में. बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आपने मुझे बहुत वेलकम दिया है. हिंदुस्तान वापस आते हर बार जब भी आता हूं तो बहुत मजा आता है, मगर इस बार खास ही ज्यादा आपकी वेलकम की तरह से. Thank you so much.